डीप इन रूट वाले में लगाओ तो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। तो आज का जो सेशन है, पहला सेशन है, दैट इज ऑन इंट्रोडक्शन टू ट्रेन 18. ओके, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, today is Wednesday. Starting from today, the next 3 days we will be only covering about train 18 or the indigenous train set which we have manufactured at ICF. हम सिर्फ उसी के बारे में cover करेंगे for the next 3 days, Wednesday, Thursday and Friday. So this is the first session about introduction of train 18, where I will just try to give you a general overview of train 18. इस सेशन में मैं आपको एक बहुत ही जो कहते हैं बहुत ही जनरल सा एक ओवरव्यू दूंगा ट्रेन 18 के बारे में। इसमें बहुत सारे सोर्सेस से डेटा मैंने लाके एक जगह पे कंपाइल किया है, and of course most of it has been taken from ICF only, or also some of them have been taken from the OEMs. उससे लेके मैंने एक पीपीटी में ब्रीफली कंपाइल किया है, सो दैट मैं ट्रेन 18 में क्या डिफरेंस है इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल ट्रेन, एंड व्हाट एक्स्ट्रा फीचर्स आर देयर, उस पे हम लोग थोड़ा एम्फेसिस, आई विल ट्राई टू एम्फसाइज ऑन दैट, और उसको हम कवर करेंगे इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. And in the second lecture, the second session, which will be from 11:30, उसमें मैं I will talk about the train 18 electrical propulsion system. ये जो traction system है, propulsion system है, कैसे propulsion system कैसा है जो मेधा ने provide किया हुआ है, तो उसके बारे में मैं discuss करूंगा इस session में. I mean in the next session. Okay. So, but इस session में we'll just be talking about some of the basic aspect of train 18. Okay. So सबसे पहले ये जो ट्रेन 18 है, ये जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक वी हैव कवर्ड इन द ट्रेन सेट लेक्चर, आई हैव कवर्ड इन द ट्रेन सेट लेक्चर दैट having a train set, if we have a distributed power rolling stock, kind of a rolling stock, which is basically nothing but a train set, we'll be able to get quicker acceleration. ये चीज I think all of us have agreed on this particular point, है ना? We'll get quicker acceleration, and that will lead us to attain greater velocity in a less period of time, and we'll be able to cover greater distance in a comparatively lesser period of time. So the general idea जब ये concept सोचा गया ट्रेन 18 के बारे में, ये 2016 में एक रेल विकास शिविर हुआ था, and during that time it was brainstormed that ऐसा हम एक indigenous train set बनाएंगे, because world wide ये देखा गया कि ट्रेन सेट टाइप का जो सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर रोलिंग स्टॉक है, this is prevalent worldwide, but India did not have any such kind of rolling stock. So that is why it was thought of कि Indian Railways will try to indigenously manufacture a train set, which will be nothing but a semi-high speed electrical multiple unit train set, which would provide quicker acceleration and will have contemporary passenger amenities. Contemporary passenger amenities से क्या समझते हैं आप? What do you understand by contemporary passenger amenities? Sir, modern look. Yeah, modern look. तो मॉडर्न लुक में देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें आएंगी जो कि हमारे नॉर्मल ट्रेनों में, स्पेशली आईसीएफ, आजकल तो हम आईसीएफ रेक कंडेम कर रहे हैं आईसीएफ टाइप के कोचेस को, बट उनमें इस टाइप का कंटेम्पररी पैसेंजर एमिनिटीज आईसीएफ कोच में बिल्कुल नहीं है. एलएचबी में भी ओनली अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट है, बट इन दिस ट्रेन सेट a lot of trust has been given, a lot of effort has been put in to completely remodel the interior of the coach. We'll see that briefly. Okay, so this was the thought process behind the train 18. Okay, so the train 18 was eventually manufactured after 2 years in 2018 by ICF, Integral Coach Factory, Perambur, Chennai, and you must be aware about Sudhanshu Mani. He was GM ICF during that time, under whose leadership ICF was able to roll out this rake in a record time. Okay, and it was a very tough job, and I will show you why it was a very tough job, that in a very limited period of time they were able to put together and manufacture this rolling stock. So you will yourself appreciate that how much work has actually gone into this train set in a very limited period of time.
सो वेरी जनरल ओवरव्यू, द ट्रेन 18 का मतलब ये नहीं है कि उसमें 18 कोचेस होंगे, इसमें 16 कोचेस हैं. इट इज 16 कार डबल हेडेड ट्रेन सेट. So 18 is just for significance is that it was rolled out in 2018. So India's first semi-high speed indigenously built train set was rolled out in 2018. That is why train 18 we are using. That is a railway parlance actually. Outside railway आप किसी से पूछिएगा वो नहीं समझ पाएंगे. They only understand perhaps Vande Bharat or things like that. But it is for us only. And even this train 18 terminology, this is also going to vanish in the future. What we'll have, we'll be calling them train sets. Basically, what we'll be calling them in future is train sets, nothing else. So it is a 16 car, a double-headed train set, and it is around 384 meters of length, and it has a total of 8 motor coaches. I think we have discussed about this. It has 4 trailer coaches, 2 non-driving trailer coaches, and 2 driving trailer coaches. Okay, so total 16 coach हैं इसमें, और all are chair car types. This is completely chair car type. So there are 16 coaches. Mr. Rakesh, are you saying something? Sir, good morning, sir. Sir, may I know the difference between trailer car and non-driving trailer car? हाँ, अभी बता रहे हैं. I will tell you. अभी ये पहला सेशन है, फिर सेकंड सेशन में आप इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम और वो सब जब देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस अपने आप समझ जाएंगे. In the next slide only, I think you will be able to understand in the coming slides. Okay. Right. So out of the 16 coaches, the 2 coaches are executive class and remaining are the normal chair car. Okay, this is the basic design of the coach. And these executive class जो है, ये जो NDTC non driving trailer car coach है, ये executive class के coach है. ठीक है. So अब पहले we'll take one at a time. इसको जो breakup करते हैं, when you break up the train 18, because it is a train set, है ना, ये एक set में चलता है. So in that set, we have an end basic unit and we have a middle basic unit. आप EMU में भी जाएं, मेमो में भी आपका सेशन हुआ है, तो उसमें बेसिक यूनिट का आपने टर्मिनोलॉजी सुना होगा. आई होप यू हैव हर्ड अबाउट द टर्मिनोलॉजी बेसिक यूनिट. ठीक है. तो बेसिक यूनिट वो यूनिट होता है which is like a single train set which can get repeated and which can be refitted many times. Okay, here and there. तो ये 4 का आप कह सकते हैं एक बेसिक यूनिट है. इसको कहते हैं एंड बेसिक यूनिट. ओके, एंड बेसिक यूनिट में क्या है, ये जो फ्रंट एंड कोच है जिसमें आपको ये नोज कोन दिख रहा है एंड ड्राइवर, इसमें ड्राइवर डेस्क है, तो दिस इज द ड्राइविंग ट्रेलर कार. ठीक है. व्हाट इज दिस? DTC शॉर्ट फॉर्म. दिस इज ड्राइविंग ट्रेलर कार. ये जो सेकंड वन है, दिस इज मोटर कोच. दिस इज द मोटर कोच. ओके, MC. एंड द थर्ड वन इज TC व्हिच इज द ट्रेलर कोच और ट्रेलर कार, जो भी आप बोल दीजिए, जो भी बोलिए. एंड द फोर्थ वन इज अगेन मोटर कोच. ठीक है. सो दिस इज द एंड बेसिक यूनिट. अगर एंड बेसिक यूनिट का कोई पूछेगा, एंड बेसिक यूनिट में क्या कौन से कोचेस आते हैं इन अ ट्रेन 18, in a train set, we will say that it consists of a driving trailer car, motor coach, trailer coach, motor coach. Okay. Similarly, then there is a middle basic unit. ठीक है. middle basic unit में है non driving trailer car, motor coach, trailer coach, motor coach. ठीक है. So यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं किसी भी बेसिक यूनिट में there are 2 motor coaches. एंड बेसिक यूनिट में भी 2 मोटर कोच है, मिडिल बेसिक यूनिट में भी 2 मोटर कोच है. सो हाउ मच परसेंटेज पावरिंग इज देयर इन आवर ट्रेन 80? 50%, sir. 50%. 50%. Now you understand why that is 50%? Because you can see that even in the basic unit level also, half of the coaches are motor coach, and we know that the motor coach have traction motors, they have powered axles, and we know the importance of powered axles from the very first session. So motor coach, we have total of 8 motor coach out of the 16 coaches in train 80. Okay. So अच्छा, now your question, coming back to your question कि ड्राइविंग ट्रेलर कार और नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कार में क्या होता है डिफरेंस. देखिए, ड्राइविंग ट्रेलर कार आपको you can see that this is the end basic unit, है ना. And in the next slide I think it will be very clear, this thing will be clear. Okay, ये थोड़ी देर के लिए मैं इसको स्किप करके ये स्लाइड दिखाऊंगा, इससे आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा. One difference I want to know between NDTC and TC also. हाँ बिल्कुल सर, that I will tell सर, वो पूरा क्लियर हो जाएगा. तो इसमें देखिए, ड्राइविंग ट्रेलर कार, आपका जो रेक का जो हेड है वो ड्राइविंग ट्रेलर कार है.
दिस इज द एंड बेसिक यूनिट एज वी डिस्कस। एंड बेसिक यूनिट के एक एंड में ड्राइविंग ट्रेलर कार है, तो दोनों एंड पे आपका एक ड्राइविंग ट्रेलर कोच होता है, ठीक है। तो ये ड्राइविंग ट्रेलर कोच के बारे में स्पेशल ये होता है कि इसमें पैसेंजर सीटिंग स्पेस होता है यहाँ तक, ये जो ब्लैक में स्पेस दिख रहा है लगभग इतना, दिस इज द पैसेंजर सीटिंग स्पेस। एंड ये जो आगे का स्पेस है, दिस इज ड्राइवर डेस्क, ड्राइवर केबिन, ड्राइवर के लिए ये इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली फॉर ड्राइविंग। And the same thing is replicated at the back end also. The same thing is replicated at the back end also. Okay. So this kind of an arrangement is there. This is the driving trailer car. Whereas in a non-driving trailer car, इसमें equipment wise आप देखें, it is more similar to a trailer car. Trailer coach क्या होता है? It is only for passenger seating, primarily for passenger seating. But the जो naming में हम लोग जो mostly difference करते हैं, the naming में difference करते हैं, it depends on what equipments are there, and what kind of equipments we are keeping. In a driving trailer car, we have mostly the driver's cabin, but in a non-driver trailer car, the driver's cabin is not there, है ना। हम ड्राइविंग का जो हमें असिस्टेंस चाहिए वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती, लेकिन उस चीज को बस आप छोड़ दीजिए। इफ यू लीव दिस ड्राइविंग केबिन आउट, इतने को आप कट कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, उसके अलावा बाकी सारी चीजें इट इज सेम टू द डीटीसी। फॉर एग्जांपल इन अ डीटीसी वी हैव बैटरी बॉक्स एंड बैटरी चार्जर यूनिट, तो एनडीटीसी में भी वही चीज है, एनडीटीसी में भी वही चीज है, बस जो चीज नहीं है वो है ड्राइवर्स कंट्रोल, ड्राइवर केबिन वो नहीं है। ओके। And motor coach में we have, of course, it is a motor coach, so we'll have the traction converters, traction motors, traction converter and brake chopper resistor. इन तीनों के बारे में briefly हम अगले सेशन में बात करेंगे, since it is related to electrical propulsion. Trailer coach में we have the pantograph. It is not shown in this image. ये lowered है, but जो pantograph है वो trailer coach में रहता है यहाँ पे. It is in the trailer coach like this. And we have the transformer underslung. We have the auxiliary converter underslung. All are underslung. ठीक है, on board नहीं है, all are underslung. तो यहाँ पे we have the pantograph. सबसे important चीज ट्रेलर कोच का है कि ये तो इसमें पैसेंजर सीटिंग स्पेस मैक्सिमम होता है और इसमें पैंटोग्राफ होता है, ट्रांसफार्मर होता है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर होता है। इन सब के पर्पस, इन सब का फंक्शन जो है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर क्या करता है, वो अगले सेशन में हम डील करेंगे। Currently I am just giving you the breakup. And again the same motor coach is repeated. It is similar. ओके। आगे हम सीटिंग कैपेसिटी देखेंगे तब आपको थोड़ा और क्लियर होगा द डिफरेंस बिटवीन कोचेस, बट नाउ आई विल जस्ट कंटिन्यू विद द मेजर टेक्निकल फीचर्स ऑफ ट्रेन 18। इट वाज टेस्टेड एट अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 180 kmph, बट वैसे उसका मैक्सिमम रनिंग स्पीड 160 kmph पे कैप किया गया है, एंड बट आई थिंक मोस्टली इट इज रनिंग इन द 130 kmph रेंज ओनली currently, due to obviously the track limitation as far as I am aware. And maximum design axle load for which it has been designed is 16.5 ton. The starting acceleration is 0.8 meter per second square, deceleration is 1 meter per second square, 50% powering is there. We have a 4-car basic unit, as I showed you. We have an end basic unit and a middle basic unit, so we have a 4-car basic unit, and we have one pantograph for each basic unit. Okay, we have one pantograph for each basic unit. So this pantograph ये कौन से कोच में रहता है basic unit में? In which coach do we have the panto? TC. Trailer coach. Thank you. That means you have been listening to the session. Very good. So in the TC trailer coach we have the pantograph. So एक basic unit जिसमें 4 कोचेस होते हैं उसमें एक ही पैंटो होता है। तो अगर कोई पूछे कि ट्रेन 18 में कितने पैंटोग्राफ हुए तो कितने होंगे? 4. Okay, 4. Very good. Okay, so now slowly you will get the numbers. You will try to understand. You will be understanding these concepts now. Okay. अच्छा, इसमें another important feature is wheel-mounted brake disc. I think we have spoken about this in the first session only. This is a departure from the current LHB type of coaches in which we have axle-mounted brake disc. And we have a wheel-mounted brake disc. And the reason is simple. The reason is more or less simple. One, obviously, on the motor coach point of view, हमें तो ट्रैक्शन मोटर वहां पे लगाना है, तो वहां पे अगर ब्रेक डिस्क एक्सल पे रहेगा तो ट्रैक्शन मोटर लगाने की जगह नहीं बचेगी. That is obviously the one of the most prominent reasons. Another reason is, of course, with wheel mounted brake disc, we get a lot of space on the axle. I will show you the image of the bogie. आपको खाली सा लगेगा बोगी और बीच में काफी स्पेस खाली मिलेगा.
Now that khali space is actually used to adjust the underslung equipments, the underslung traction and propulsion equipments, electrical equipments. जनरल हमारे कन्वेंशनल EMUs में मेमूज में क्या होता है कि जो इक्विपमेंट्स होते हैं कुछ अंडरस्लंग भी होते हैं, no doubt there are underslung equipment also, but there are we have the ST compartment in the motor coach and in the motor coach of the EMU, that occupies a lot of space. So train 18 mein we cannot afford to do that, so that is why we have made everything underslung. All propulsion equipments are basically underslung in train 18. This is one of another very key design point. And due to this point only, a lot of redesigning had to be done, especially for the bogie. Bogie had to be completely redesigned. Request participants to please mute themselves during the session. Okay. Please keep your microphone at mute, otherwise it is creating disturbance to me and also the other participants. And another very important point here is it has a bolsterless bogie. इसका जो bogie है इसमें bolster होता ही नहीं है. So I think we have discussed this in the first session. Can someone tell me कि bolsterless bogie अगर I discussed this कि अगर आपको bogie से bolster हटाना है तो वो कौन से दो इंपॉर्टेंट चीजें जो बोगी में आपको रखना ही पड़ेगा? Which are those two most important things which you must have in a bogie? हाँ, Mr. Ram. Air spring and yaw damper. Very good. And yaw damper. We need to have air spring secondary suspension, and we need to have a yaw damper arrangement. है ना, connecting our coach car body with the bogie, तो yaw damper. अगर ये दो चीजें आपके पास हैं, तो you can remove the bolster, है ना, you can remove the bolster, and that has been done high speed operations में. This has been done, and train 18 में also has been done. But of course, उसके लिए there are other minor modifications which have been done in the bogie. And those modifications will be covered in a separate lecture on bogie, which will be taken by one of the SSE from ICF. I think the lecture is tomorrow, first session. So specifically, he will be only talking about bogie, what modification has been done and what is different about the bogie. Okay, so in-depth analysis you will be getting in that lecture. Okay, and more features if you talk about from the furnishing point of view, from the interior point, we are talking about contemporary passenger amenities, है ना? हम बोल रहे थे कि contemporary passenger amenities होना चाहिए. उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें इंटीरियर पैनलिंग विद कंसील्ड स्क्रूज, ओके, एलईडी लाइट फिटिंग्स जो है इसमें डिफ्यूज टाइप ऑफ लाइटिंग है, वो तो एलएचबी में भी रहता है बट इसमें थोड़ा अलग टाइप का डिफ्यूज है. वी विल सी दैट GPS based passenger information system, this is something which is there. Of course this feature is now being included in many Tejas rakes and even in the smart coaches, but इसमें भी है GPS based passenger information system, CCTV system, anti-graffiti exterior painting, automatic glass panel touch free IC intercommunication sliding door. ये बेसिकली ये जो ग्लास पैनल डोर ये है कि आपको एक कोच से दूसरे कोच जाना है तो दोनों कोच के बीच में यू हैव ग्लास पैनल टाइप स्लाइडिंग डोर्स जो अपने आप ओपन क्लोज हो सकता है. सो आई विल शो यू that. And FRP modular toilet for persons with mobility restrictions. We have a special toilet for disabled. Wi-Fi का arrangement है, vacuum assisted bio toilet है, onboard infotainment system है, maximum seat, ठीक है. I think इसके बाद के maximum features we have almost discussed the features after this point. So here we have a provision of indirect LED lights on luggage racks and AC ducts. This feature, this is something which was experimented for the very first time in Indian Railways, the provision of indirect LED lights. And I will show you what do I mean by indirect LED lights. There is a direct LED light and there is an indirect LED light. It is more like the ones which we have in flights. अगर आप flights में गए होंगे तो luggage rack के बगल में आपने देखा होगा डिफ्यूज टाइप के एम्बिएंट लाइट होते हैं, उस टाइप का सिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है. एंड स्पेशल एयर कंडीशनिंग डक्ट फॉर साइलेंट एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडीशनड एयर. दिस इज अनदर एरिया वेयर अ लॉट ऑफ एनालिसिस हैज बीन डन. इनफैक्ट CFD एनालिसिस इसमें किया गया है, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स एनालिसिस किया गया है कि
एयर कंडीशनर जो हमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, डक्टिंग सिस्टम है, उससे जब व्हेन वी गेट द एयर फ्रॉम द डक्ट्स, टर्बुलेंस ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, एंड उस वजह से आई मीन the noise should not be emitted in that process. So that study has been done and that has been ensured. Revolving seats, Wi-Fi, okay, ये सारी चीजें हैं. So another very important point here is that this is a curve. This is one of the operational characteristics of train 18, where you can see the acceleration versus speed curve. And at lower speeds, you can see that the acceleration, the starting acceleration, 40 से ज्यादा है, 40 तक तो वही सेम रहेगा. यही तो नहीं है तुम्हारा टाइम, यही बचता है फिर उसके. Again, I am seeing that many participants are not able to mute their microphone. I would have no other option but to expel some of the participants if they are unable to control. Okay, so kindly please pay attention to this particular aspect because it is creating unnecessary disturbance. Okay, so acceleration versus speed curve अगर आप देखेंगे तो up to around 42-43 kmph तक you will get an initial good starting acceleration of 0.8 meter per second square. उसके बाद ऑब्वियसली विद द स्पीड एज द स्पीड इंक्रीजेस तो ट्रैक्टिव एफर्ट भी आपका, हमने उस दिन ट्रैक्टिव एफर्ट वर्सेस वेलोसिटी का देखा था, तो इन अकॉर्डिंग्स टू दैट आपका उस हिसाब से आपको एक्सेलरेशन भी जो मिलने लगता है वो भी कम मिलने लगता है, ओवरऑल नेट एक्सेलरेशन. जस्ट अ Okay, so acceleration decreases with the increase of speed. And another very important curve here, plot here, which I want to show, is the tractive effort versus braking effort curve. And not the versus, it is the tractive effort versus speed curve and also the braking effort versus speed curve. तो ट्रैक्टिव एफर्ट का हमें तो मोस्टली पता था कि ट्रैक्टिव एफर्ट, मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट यहाँ लिमिटेड होता है एक पॉइंट तक. ये जो यहाँ पे जो ये पैच बना हुआ है, फ्लैट पैच बना हुआ है, what is this particular thing? ये यहाँ पे ये फ्लैट पैच का रीजन क्या है? Anyone? We discussed in the very first session कि ट्रैक्टिव एफर्ट वर्सेस वेलोसिटी कर्व वैसे देखा जाए तो आइडियली ऐसे होना चाहिए. एडिशन, correct, adhesion limit, very good. So you see, you also remember some of the concepts, that is very good. So now you are able to correlate even in the acceleration plot here and in the tractive effort plot here कि ये जो constancy जो आ रही है ना, इनिशियली ट्रैक्टिव एफर्ट, स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट एक पॉइंट के बाद आके स्टेबल हो जा रहा है, उसके बाद ड्रॉप होने लग रहा है. तो ये जो ये यहाँ पे जो कांस्टेंट हो जा रहा है ट्रैक्टिव एफर्ट एट अराउंड 106 किलोन्यूटन्स, दिस इज ड्यू टू द एडेसिव लिमिट, है ना. दिस इज अ मैक्सिमम, ये मैक्सिमम एडेसिव लिमिट लाइन है, आप इतना मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ये मैक्सिमम है, जरूरी नहीं है हमेशा 106 किलोन्यूटन आपको मिले, इससे कम ही मिल सकता है. It all depends upon how you are managing adhesion in your rolling stock. Okay, so 106 kilonewton तक, this is 106 kilonewton per motor coach, mind you. ये जो भी मैं दिखा रहा हूँ, this is per one motor coach. Okay, ये आपको मिलेगा. And फिर obviously with the increase of speed, tractive effort धीरे धीरे decrease होने लगता है. And this is actual data of train 18. Okay. Similarly, अगर आप ब्रेकिंग एफर्ट देखेंगे, now ये जो ब्रेकिंग एफर्ट है, ये नेगेटिव में 96 किलोन्यूटन तक है. Now, what kind of braking effort am I talking about here? किस तरीके का ब्रेकिंग एफर्ट के बारे में बात कर रहे हैं? Electrical braking, sir. Yes, not electrical. You should call it regenerative braking. Regenerative, sorry. And in fact, these guys are ICF and the Sagur Basti train set depot. They call it ED braking, electrodynamic braking. Okay, it is electrodynamic braking or regenerative braking. Concept वही है जो मैंने पिछली बार बताया था. We convert the traction motors temporarily into generator alternators sort of, and वो kinetic rotary energy को, it converts the rotary energy into electricity, and due to that it gets a massive amount of retarding force, है ना. तो आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टिव एफर्ट हमें पर कोच 106 किलोन्यूटन का मिल रहा है, और अगर हम ब्रेक लगाना चाहें, if you are at full speed and if you want to brake,
you can also get a good amount of maximum braking effort also आपको मिल सकता है. But of course, when you are starting from a very high speed, आप, for example, you are at already 130 kmph, मान लीजिए आप 130 kmph पे है, तो आपको obviously 40 किलोन्यूटन का ब्रेकिंग एफर्ट मिलेगा as per this curve. Okay, आप ब्रेकिंग कब लगाते हैं? हाई स्पीड पे लगाते हैं. But आप lower speeds पे you will get on lower speed only you will get this high value of 96 kilonewton of braking effort. But ये lower speed पे ही होता है. Okay. So यहाँ पे ये बट हमारे एक्चुअल ब्रेकिंग रिक्वायरमेंट जो कोच की होती है इससे ज्यादा हो सकती है. 40 kilonewton may not be 40 kilonewton per motor coach may not be enough to stop the basic unit, है ना. 40 kilonewton पर मोटर कोच मतलब अगर 8 मोटर कोच हुए तो 320 kilonewton ऑफ रिटार्डेड फोर्स आपको काफी नहीं होगा एक ट्रेन को रोकने के लिए जो 130 kmph पे चल रही है. तो बाकी फोर्स कहाँ से आएगा? EP braking. Yes, EP braking. the remaining will be getting from EP braking. Remaining will be getting from the electro-pneumatic braking. Okay, so that blending it is continuously doing. है ना? There is a brake control unit and a brake electronic control unit in the coach which is doing continuous calculation. Continuously it is calculating कि इस plot में कहाँ पे है. For example, आपका speed 100 kmph पे आ गया, so it will now it will try to see how much braking effort it can get. It will find out that now I can get close to 60 kilonewton of braking effort due to regenerative braking. So the amount of EP braking required will be less. Yes or no? It will be less. So that means what I intend to say is as the speed goes on decreasing, the amount of pneumatic content of braking, electro-pneumatic content of braking required may become comparatively less because you can control your rolling stock mostly by the use of this braking only, regenerative or electrodynamic braking only. But of course, to come to a complete standstill, you need pneumatic braking. आपको complete standstill तक जाना है तो finally आपको कहीं ना कहीं a bit of pneumatic braking is required. But the basic purpose, the basic concept which I want to impress upon your mind is that braking is always a combination of braking. Okay, it is a combination of electrodynamic ED, that is also regenerative, also called as regenerative, plus EP. And why I have written ED on the top is because the first priority is ED. That is how the logic has been defined. सबसे पहले ED ब्रेक लगाने की कोशिश की जाएगी और जो बैलेंस बच गया that will be obtained from EP brake. It is not the other way around. Okay. So this is a DTC. Sir, the application of EP brake is automatically done by the loco or the manually loco pilot has to? No, obviously the loco pilot. Now, how can the train set know when to brake? You see, it is not automatic train operation. Na? Signal aspect has to be read by your loco pilot. Okay. And what loco pilot will do that on his driver desk, we have a separate lecture to be taken by Medha on driver desk unit. They will explain it to you. They are the experts. But on the driver desk, we have a master controller. I think you may have heard of something called as a master controller in which there is a knob like this. Okay. Now in that knob, either it can move 45 degrees in the forward direction or 45 degrees in the backward direction. If you are moving the master controller in the forward direction, that means you are asking for traction. आप traction demand कर रहे हैं. Okay. So your traction motors will go full throttle to give you the tractive effort. But if you are moving it beyond the center point, if you are moving it in the backward direction, that means you are asking for braking force. What we are asking for? You are asking for braking force. So once you move the master controller in the backward direction, loco pilot को इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है. That is it. उसको बस braking force demand करना है. After that, it all depends upon the brake control unit and the brake electronic control unit of the train 18 to decide कि given कितने speed पे train चल रही है, that it will gauge कितने speed पे चल रही है, and accordingly how much braking as per the position of the master controller it is calibrated. इस particular position of master controller में कितना braking effort देना है. For example, it calculates like 1000 kilonewton. 1000 kilonewton total को चाहिए. उसमें से कितना how much can I provide from EP brake? From the regenerative ED braking. So for example, it comes up with a calculation of 400 kilonewton at that speed. तो 400 वो electrodynamic brake से देगा और जो balance है 600 kilonewton वो electropneumatic braking से देगा. ठीक है. So what the driver has to just do, he has to just move the master controller in the back direction to ask for retardation. So the retardation will start.
Sir, simultaneously, right from initial stage, it will come simultaneous, parallel, sir. ED and EP, or after EP, ED will come. ED come, EP after ED. No, it's simultaneously. I mean, if everything, if it can be controlled with completely regenerative only, then obviously only the regenerative braking will be applied. But generally, it is always a blended brake. It is always a combination. Okay, that algorithm, you see, that algorithm is not very clear to us. That is like a black box. What these Medha has designed for braking, that is a black box. But what they tell us is that it is always a combination of braking. It is blended braking. Okay, and what is the proportion, exact proportion, that I told you how it is decided on the basis of that plot I showed you earlier. How much braking effort, electrical braking effort it can get depending on the speed, and you subtract it from the actual braking effort required, and the remaining balance portion has to be provided pneumatically. सर Okay, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक जो ब्रेकिंग होगी तो उसके लिए सर मतलब प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, तो एयर प्रेशर कैसे कंट्रोल होगा सर इसमें, मतलब जो वेरिएशन है? हाँ, उसके देखिए इसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम है ट्रेन 18 का, ठीक है, इसका थोड़ा सा हमारे नॉर्मल न्यूमेटिक ब्रेकिंग से ये अलग होता है, ठीक है. हम इन आवर LHB कोच, our control signal for braking, what is the control signal for braking in our normal trains currently? BP, dropping of BP pressure. Dropping of BP, okay. 5 kg से अगर 5 kg per cm square से BP drop होगा, that is the control signal. But this kind of a control signal is again, it is as I like to say, it is obsolete. It is an outdated concept, okay. But in the electro-pneumatic braking, we get a proper electrical signal that the brake has to be applied, and then pneumatically the brake cylinder pressure is increased or decreased depending on the requirement. That is the basic working mechanism, but it is not as easy as that. It is not as easy as that. इसमें एक detail, there is a little complicated mechanism, and इसीलिए we have a separate lecture which has been organized where KBIL, which is Norbremse, they will be specifically taking a session on EP brakes. Okay, and there I think you will be able to get a better idea. Okay. So these are some of the drawings of the DTC, driving trailer coach, and the motor coach. Okay. What I intend to show here is the seating capacity. In the DTC, it is coming to 44, 78 in the motor coach. Next trailer coach 78, and the last NDTC it is coming to 52. The last NDTC it is coming to 52. So you may ask me, sir, why there is a difference between the seating capacity of the DTC and NDTC when you are saying they are more or less the similar? You see, there are basic difference. Here top view mein dekhiye, if you look at the top view here, in the DTC, in the top view, what do you see? This is the driver cabin. This is the nose portion, driver cabin. There is a pantry portion, and almost till here there is no passenger seating available. And even at the back end here, we have provided a special lavatory for the disabled. So यहाँ पे space requirement यहाँ consume हो गया, तो seating capacity थोड़ी सी कम है, 44 है. Whereas in the NDTC, थोड़ा सा layout अलग है. We have a mini pantry and storage. We have electrical panels here, and again we have toilets on both sides, standard size toilets on both sides. And this is the seating capacity. तो थोड़ा सा difference आ जाता है due to what features we have provided in the coach. Okay. But here we have 78 constant in the MC and TC. Okay. So when you calculate the passenger capacity की एक में train 18 में कितने जा सकते हैं, it will come to something around this 1128. Okay. Now let us start with some important features of the train 18, like from the rolling stock point of view, and what are a few notable difference in comparison to the normal rolling stock. I will be only covering those points, starting with the shell, of course. So the shell, you see, it is a tubular structure more or less similar to the LHB shell. It is more or less similar. Shell में कुछ minor modification किया गया है, and even for the train 18 shell, from the aerodynamic point of view, some consultancy has been taken from an outside firm also while designing train 18. ICF has taken some consultancy from some outside firm to validate that their shell design is good for semi-high speed operation. Okay, so that they have done. Here you see one very important notable difference I want to point out is that there is no trough floor.
with the corrugated type of trough floor which we used to have, इसमें trough floor नहीं है वैसा corrugated type का, इसमें 2 mm thick SS cover sheet है. There's something like a stainless steel type of a cover sheet instead of the trough floor in the bottom. That is that has been provided. Can someone tell me why this has been done? Load on body load will come. नहीं, the trough floor का क्या material होता था? What was the composition of trough floor? To less bimetallic corrosion, SS. नहीं, okay, bimetallic corrosion के लिए होता था, लेकिन जो corrugated type trough floor, देखिए trough floor we used to provide obviously to dissipate the load. Trough floor won't bend or dent. It won't bend. Was basically made for the corrosion as well as for longitudinal forces also. Longitudinal force also, right? Correct. But what they have done is they have replaced the trough floor. Actually, it is a very debatable topic, which on many forums it has been raised that the trough floor of an LHB coach is the weakest link when it comes to accidents, when it comes to collision type of or accidents, derailments. Trough floor is the weakest portion, है ना? There are many experts have a view that आपके बाकी austenitic और ferritic stainless steel का structure है, sidewall है, roof है, they can take that much impact, but your trough floor, it is weaker, comparatively weak, and that is why there is a very good tendency, there is a very good chance that the trough floor may not be able to take the impact of such derailments or accidents. So I think that was one of the thought process which went into replacing the trough floor with 2 mm thick SS cover sheets on the underframe. Okay, and this was basically from the point of view from the safety point of view, actually, that it should not happen, but in the eventuality that such a mishap happens, so train 18, because we know it is semi high speed and it is supposed to run at very high speeds, so from that point of view the strengthening is better. The overall strength of the rolling stock in which the passenger of the car body in general, on which the passengers are sitting, it is strong. That is one point. Another important point is कि हमारा जो underframe में है, I have told you the most of the propulsion equipments are underslung. So उससे होता क्या है कि a greater amount of stress is now being created on the floor. फ्लोर पे अब एक्स्ट्रा स्ट्रेस आ रहा है. जो हमारे कन्वेंशनल आईसीएफ या एलएचबी कोच है उसमें इतने अंडरस्लंग इक्विपमेंट्स नहीं होते, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा है. So that is why what they have done is they have that is why gone for this SS type of cover sheet in order to take that load also. So that was the thought process behind replacing the trough floor. So underfloor में channels may be more, na sir? हाँ, channels will be more. There is मतलब center sill type of a design है, IRSM 41 cotton steel with center sill design है. Okay, but there are many reasons why they considered of replacing the trough floor, and even there is a thought process currently going on even now, even in ICF, that even in the normal LHB this trough floor should be replaced with these kind of SS stainless steel type of sheets only. I'm not very sure. I'm not an expert in this matter. I don't belong to production unit, but I think some design, some analysis is going on in this particular direction also. Okay, so these are some again factual data about the underframe. Sole bar section is similar. One very important thing is the headstock. The headstock here now from the coupler point of view, some modification had to be done to adjust the semi-permanent type of coupler. क्योंकि हमारा जो सीबीसी कपलर है, ड्राफ्ट गियर जो सीबीसी कपलर का बफर हाइट है वो इससे तो ऊपर रहता है, बट इसमें कपलर हाइट इज लोअर एक्चुअली, and that we will see in the coupler section why it needed to be lowered, and for that some design changes had to be made in the headstock. And after doing all these modifications in the coach, it was not just randomly they did the modification and they just brought out a new shell. ऐसा नहीं है. This, as I showed you, that one consultancy firm was hired from abroad. It did some simulation analysis. It did a lot of simulation analysis. You can see the bending modes here are being analyzed. This is the first bending mode of the train set car body. So the bending modes were analyzed. The structural elements, structural rigidity was analyzed.
and car body was designed to meet the requirements of these two standards. These are some international standards. This EN 12663 is basically for structural requirement of railway vehicle bodies, and this second DBS 1612 is for testing the design and endurance strength assessment of welded joints. Okay, so we know that there are many welded joints in this car body, so we have to test the design and endurance strength also. So obviously, we cannot do a destructive type of a test on the actual car body as such in the production unit. That kind of a test is very difficult to do, but we can do a simulation analysis. That no one is stopping us from doing simulations like these. And these simulation platforms were utilized extensively to study the characteristic of the car body. Not only car body, even from the bogie point of view, also many studies have been done. Okay, and after that only this train set was brought out. Then let us come to bogie. Again, the most important safety related component in the train is a bogie only. And as I have repeated umpteen number of times, it is a bolsterless design of bogie, which we are having. Another important point here is that it has fully suspended traction motor. Okay, fully suspended traction motor. Third, disc brake with brake disc on the wheel. We are aware about that by now. And we have air spring secondary suspension. So now when they were developing the bogie, उनके पास ऑप्शन क्या था कि we can go with the existing Fiat bogie जो 160 kmph के लिए enabled already है. But the existing Fiat bogie, one biggest drawback with that was you cannot make a motor bogie out of it. Motor coach का आप bogie नहीं बना सकते, because traction motor fit ही नहीं कर सकते वहां पे. Okay, तो मोटर कोच के लिए बोगी तो मॉडिफाई करना ही था. तो दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन वाज कि ऐसा व्हाट वी कैन डू दैट द ट्रेलर कोच बोगी वी कैन कीप इट सेम एज दैट ऑफ नॉर्मल एलएचबी बोगी, एंड द मोटर कोच वी विल मॉडिफाई स्पेसिफिकली फॉर आवर रिक्वायरमेंट. But then they thought कि ये भी अच्छा अरेंजमेंट नहीं है, because this will lead to non-standardization of car body and bogie for train 18. We want to make a separate series, a separate standard for the bogie for train set. तो इन्होंने completely new development किया यहाँ पे, जिसमें motor और trailer bogies were completely redesigned and standardized for train set. है ना? So what redesigning was done? We'll have a separate session completely on bogie only tomorrow, first session. But I will just give a brief overview here. You may not be seeing a lot of difference here. You may not be able to see a lot of difference here in these things. But one very important thing here is, one very important thing which you can see is in this motor coach bogie, the traction motor is fully suspended traction motor, type traction motor. So can someone tell me what is the meaning of fully suspended traction motor? And what other type of arrangement do we have in traction motor suspensions? If anyone is from the locomotive side, they perhaps would be aware, from the power side or something. Hello, am I audible? Sir, there won't be any load on axle direct for motor. So that is the fully suspended traction. You see, other than the fully suspended traction motor, there used to be another type, the nose link hung, nose link hung type of traction motor. The design used to be there. That is partially suspended, but this case it is fully suspended traction motor. What I mean to say is कि इसमें जो traction motor होता है, ये पूरी तरीके से इसका पूरा weight इस bogie frame पे आता है. Okay, just 1 minute.
Okay, so in fully suspended traction motor, the complete weight of the traction motor is coming onto this bogie frame. ये जो bogie frame है, यहाँ पे पूरा आपका weight आएगा traction motor का, ठीक है? And it will, through a flexible coupling, it will be coupled to the axle pulley, not to the axle gear. Okay, and इससे होता क्या है? What is the advantage? I mean, what is the advantage of a fully suspended traction motor? कंप्लीट अगर मैं ट्रैक्शन मोटर का वेट बोगी फ्रेम पे डाल देता हूं तो उसमें क्या एडवांटेज है? व्हाट एडवांटेज एम आई गेटिंग? It will distribute the load to both axles. Distribute the load. There won't be any relative motion between car body and bogie. हाँ नहीं, देखिए वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज की द कॉन्सेप्ट ऑफ अनस्प्रंग मास. स्प्रंग मास एंड अनस्प्रंग मास, आपने सुना है कभी अनस्प्रंग मास के बारे में? आप कभी भी रोलिंग स्टॉक बोगी डिजाइन में अभी कभी पढ़ेंगे तो हर कोई बोलेगा कि अनस्प्रंग मास जो है इट इज नॉट वेरी गुड. वी डू नॉट प्रेफर अनस्प्रंग मास ऑन आवर एक्सल. अनस्प्रंग मास बेसिकली वो मास होता है जो जिसको स्प्रिंग का सपोर्ट नहीं होता है, जो जिसको सस्पेंशन का सपोर्ट नहीं होता है. आई मीन टू से दैट इफ दिस कंप्लीट ट्रैक्शन मोटर इज समहाउ So if I put the complete weight on the axle, मेरा axle load बढ़ जाएगा और उस वजह से जो rail wheel interaction point पे here at the rail wheel interaction point, the vertical stress that will be going down onto my track that will be very high. So can you imagine उस वजह से problem क्या होगा? उस वजह से प्रॉब्लम ये होगा कि हमारा ट्रैक प्रोफाइल जो है it will get damaged much more frequently. It will get damaged. And even from the wheel point of view, our wheel shelling problem will be there and many problems will arise. उस वजह से बहुत problems हो सकते हैं. That is why it has been proven that for high speed operation, जब आप higher speed operation पे ट्रेन चलाने जाते हैं, तो it is always preferred to have fully suspended type traction motors. Fully suspended type traction motors में ये पूरा traction motor का weight आपका इस bogie frame पे आएगा. And this bogie frame, you can see it is supported where? It is supported on the primary suspension. तो लोड आपके एक्सल पे थ्रू द प्राइमरी सस्पेंशन जाएगा. तो एक तरीके से इट इज अ स्प्रंग मास नाउ. ओके, सो स्प्रंग मास इज प्रेफर्ड, अनस्प्रंग मास इज नॉट प्रेफर्ड. ओके, सो फुल्ली सस्पेंडेड ट्रैक्शन मोटर का ये कॉन्सेप्ट है. एंड दैट इज व्हाई इन ट्रेन 18 वी वेंट फॉर फुल्ली सस्पेंडेड ट्रैक्शन मोटर्स, है ना. सो व्हाट वी डिड विद द बोस्टरलेस बोगी डिजाइन एंड फुल्ली सस्पेंडेड ट्रैक्शन मोटर, दैट द ओवरऑल अनस्प्रंग मास वाज रिड्यूस्ड. The better ride comfort was attained. It has been I don't know what the future trend will be, but it is said that it will lead to reduced number of wearing parts. We'll have greater stability at higher speed because of yaw damper and rigidity of rubber components, of course, yaw damper, and better performance on curves. That is what it is being claimed. Okay, so this is the bogie of a train 18, and you can see a lot of space has been freed up. We have this axle mounted, wheel mounted brake disc here. Wheel mounted, यहाँ पे brake disc दिख रहा है. So axle is more or less empty. So and we have just secondary suspension. The bolster is completely missing. There is no bolster at all. So we have suddenly we have a lot of space. We have a lot of space to put underslung equipments and adjust them. Okay. But whenever we do any modification in a bogie frame, of course, we need to do some structural analysis. Randomly कर नहीं सकते because it is a safety related issue. So again, some external agencies were hired and these kind of simulation analysis were done to study the structural rigidity of the bogie frame. है ना, bogie design validation भी किया गया था. And many such important points, structural analysis of various bolted joints were also examined, whether they will be able to take these high amount of stresses which will be arising during the train operation, during the train running. And only after that, only this bogie has been rolled out. Okay. Now, if you want to know the details about the bogie, we'll have a separate session on bogie tomorrow morning. Okay. And also some analysis on the wheel also has been done. Now let us come to the furnishing. अब शेल की बात कर ली, बोगी की बात कर ली, अब थोड़ा ऊपर आते हैं, फर्निशिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं. उसमें क्या क्या चीजें हैं.
So you must be aware there are many provisions. One of them being, the automatic type of plug doors. We have a automatic plug doors wherein it is not like the normal swing type of a sway type doors which we have in LHB. This is automatic electrically connected, electrically controlled plug doors. This has been supplied by Norbems. Then another very important feature here is the continuous window. The continuous window is that if you look at the train 18, it will seem to you like that all the windows are continuous. All the windows are continuous like these, but that is not the case. जो विंडो के sections तो बने हुए हैं as such, but उसके ऊपर जो इन्होंने glass लगाया है, the glass is continuous. But again, it is something, it is a design which, again, it is from the maintenance point of view, there are a few complaints from the maintenance side, because these more the amount of glass content in a coach, greater is the chances of breaking, because we have because we have some stone pelters also who keep pelting stones onto our rolling stock. So, your maintenance point of view, say it may not be a big success, but from the aesthetic point of view, external aesthetic point of view, it looks very good. The continuous window. Panel and interiors were designed by the two firms, BFG and Hindustan Fiber. We have the intercommunication door between coach that has been provided. And one very important point is fully sealed gangways and external fairings. We'll talk about this in the coming slides. A vacuum assisted biotoilet, PVC based flocked floor covering has been provided by Flotex. So furnishing में ऐसे बहुत सारी चीजें provide की गई हैं, which has improved the interior aesthetic look. One very important component is, of course, this FRP nose cone. This FRP nose cone, which has been provided to give that swanky look and also to provide the aerodynamic performance to this particular train set. Okay. But another drawback with this FRP type nose cone is that during CRO, these nose cones generally get damaged, and फिर इसका replacement, front portion का replacement बनाना, it is a big headache for the maintenance depot. So I think it has now been proposed more or less to replace this FRP nose cone with some other material. Some are proposing SS type of nose cone. Some studies going on in that direction. I am not aware. But in the initial design, we had this FRP type nose cone in the initial train 18, the two prototypes which have been released. Then, we have this automatic plug doors with retractable footstep. इसमें सिर्फ ये plug door ही नहीं है, इसके साथ आपके पास ये इस तरीके का footstep भी है जो अपने आप बाहर आ जाता है. And provision of the sliding step required shifting of the doorway to the end to avoid infringement with the bogie. तो ये जो स्लाइडिंग स्टेप है वो बोगी के साथ ना हो, तो थोड़ा सा डोर को शिफ्ट करना पड़ा, थोड़ा एंड वॉल की तरफ आप देख सकते हैं, इसको शिफ्ट करना पड़ा, तो दैट हैड टू बी डन. ओके. एंड डोर क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्विच इज अवेलेबल विद द लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट आल्सो एंड विद द गार्ड आल्सो, दोनों के पास अवेलेबल रहता है, दैट स्विच इज अवेलेबल. ओके. डोर क्लोजिंग जो जनरली होता है उसमें टाइम डिले 3 सेकंड का होता है. इफ द गार्ड डिसाइड्स टू क्लोज द डोर, अगर उसने बटन प्रेस किया तो उसमें 3 सेकंड बाद वो डोर क्लोज होगा. एंड डोर ओपनिंग, व्हेनेवर द डोर ओपन्स, द ट्रैक्शन इज कट ऑफ. दिस इज वन इंपॉर्टेंट इंटरलॉकिंग व्हिच हैज बीन डन विद द ट्रैक्शन सिस्टम, कि अगर डोर ओपन कंडीशन में है तो आपको ट्रैक्शन नहीं मिलेगा. ये एक इंपॉर्टेंट इंटरलॉकिंग प्रोवाइड किया गया है. दैट मीन्स कि आप खुले कंडीशन में, जब दरवाजा खुला है, आप ट्रेन को चला नहीं सकते. दैट इज वन इंपॉर्टेंट इंटरलॉकिंग व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड. These are some of the technical features of the door system for your kind viewing. And this is the exploded view of the door components. We have a header gear basically. ये header gear सबसे important component होता है इस door assembly का. और ये door control unit. This is the most important control unit which controls the movement of the door. Then the brake system, as I said, and the brake system, we have a combination of EP brake and ED brake, electropneumatic and electrodynamic brake. We have blended braking type of a system here. So you can say it is a sort of a 2-tier redundancy type of a braking system. है ना? कि
हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग का भी फीचर अवेलेबल, मैकेनिकल ब्रेकिंग का भी फीचर अवेलेबल है. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिडंडेंसी एनेबल्ड ब्रेकिंग. And another very important feature in the braking system is that in this train set, we have load corrected type of a braking system. Load corrected braking system. That means कि एयर स्प्रिंग सस्पेंशन पे कितना लोड आ रहा है, हाउ मच पैसेंजर लोड इज देयर, उसको गेज करते हुए ब्रेकिंग प्रेशर, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेकिंग में ब्रेकिंग प्रेशर उस हिसाब से ब्रेक सिलेंडर में एडजस्ट किया जाता है. ओके, now you can compare this to the APM device which we have, APM system which we have in a wagon. So in a loaded wagon and in an unloaded wagon, you know that in the loaded and unloaded wagon उसमें braking effort, जो braking force है उसकी requirement पे difference होता है. Okay, there is a difference. So similarly, even in the passenger coach also, in this train 18 also, a load corrected mechanism for braking has been provided. How that exact mechanism works, that will be covered in the lecture by Nor Bremse, executive, who will be taking the session. But this provision is there, that is what I'm telling you. Then इसमें WSP system भी है, of course we have the WSP system in this one also. And हाँ, अब ये जो ब्रेकिंग के लिए जो न्यूमेटिक प्रेशर चाहिए वो कहाँ से आएगा, उसके लिए हमारे पास 4 कंप्रेसर्स हैं. We have 4 compressors in the entire rig to generate the pressurized air for the pneumatic braking, out of which generally 2 compressors are sufficient to apply the brake. 4 कंप्रेसर में से एनी टाइम पे 2 कंप्रेसर काफी होते हैं ब्रेक लगाने के लिए. And in this braking system, one very important aspect is that we have a bogie controlled braking system. For example, individual bogie has its own electronic control. Each individual bogie has its own electronic braking control. That means कि ऐसा भी there is a situation may arise that this particular bogie, the brake may be applied, and in this bogie the brake may not be applied. Ideally that should not happen, but what I intend to say is the bogie braking of individual bogie is independent of each other. It is of course controlled by a central unit in the coach, but they are independent of each other. Okay. Bio vacuum toilet, I think this is something which does not need any introduction. Yeah, we have these kind of bio vacuum toilets in many of the coaches nowadays, vacuum assisted bio toilets. From the interior side, I have already mentioned, and I will again repeat that many features have been incorporated in this train set to provide a good aesthetic look. Now we'll just talk about it in a little more elaborate manner. Now you must be aware that in our coaches we provide a decoupling arrangement at the floorboard. ये जो floor है अपने coach के अंदर, इसके नीचे एक decoupling arrangement रहता है. Okay. Do you know why the decoupling arrangement has been is provided in the floorboard? Anyone? No, sir. Because you see, I don't know whether when you travel in an ICF coach versus you travel in a LHV coach, in which coach do you feel that there is more noise coming from the floor or more vibration is there on the floor? किसमें ज़्यादा feel होता है? It is comparatively, you would say that the more you will feel more vibration in ICF coach, not in LHV coach, because in an LHV coach design, initially the design is of course more than 30 years old now, but there is a decoupling arrangement in which the underframe layer is decoupled from this layer, the floorboard layer. ठीक है, underframe का अलग layer होता है, floorboard का अलग layer होता है, दोनों के बीच में रबर से हम लोग decoupling करते हैं. इससे होता क्या है कि वाइब्रेशंस जो हैं थोड़े बहुत काफी कम हो जाते हैं हमारे फ्लोरबोर्ड लेवल पे, और फ्रॉम द नॉइज पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो वी आर डीकपल्ड, है ना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द नॉइज इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द रेल व्हील कॉन्टैक्ट पॉइंट. नीचे से जो रेल और व्हील के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है वहां से काफी नॉइज आता है, तो वो नॉइज पैसेंजर केबिन में ना आए, इसीलिए डीकपलिंग अरेंजमेंट दिया गया है. And in the train 18, the system has not been changed. It is more or less similar to the normal LHB coach. The decoupling arrangement is similar. Okay. And we have PVC based flocked floor coupling, flocked floor covering. Acha, when I was talking about these partition doors, है ना, interconnection doors, तो इस type के glass doors हैं
जो कंपार्टमेंट डोर्स हैं अपने आप ये बटन प्रेस करने पे इस तरीके से दे विल ओपन एंड दे विल क्लोज. ओके, so these have been provided in the coaches, and they are electrically operated intercommunication sliding door. That is what they are called. Okay. And in the roof paneling here, we can see that in the roof paneling, here you can see there are the AC ducts here. The duct have been provided. And here, there are two type of lightings which you can see. I was talking about the direct light and indirect light. So if you look at the cross-sectional diagram here, this is the LED indirect lighting. This light is not directly pointed towards the passengers. Okay. And एक ये direct light है जो direct passengers की ओर pointed है. Okay. So and इसके बीच में ये इस तरीके के AC diffusers भी. Okay. So what happens that due to the LED direct lighting, we obviously get light within the coach, but due to this indirect lighting, एक वो ambient atmosphere, अगर हमने direct light को switch off कर भी दिया, तो indirect lighting से some amount of ambient light still stays in the coach. Okay. It will be more clear here. This is a simulation view of the coach lighting. This is the roof sheet. ये roof sheet के नीचे you can see this loop structure which has been provided, the bent loop structure. और ये जो आपको जो ये cross section दिख रहा है, ये blue, what is this? What is this for? Any idea? AC duct. Air duct. Very good. Yes, this is the air duct. And then we flatten it out here. अब अच्छा यहाँ पे जो lighting लगा रहे हैं तो ये जो bent portion है यहाँ पे we have LED diffuse lighting, which is the indirect lighting, and we have a direct lighting which is directly targeted towards the passengers. This has been provided, and the roof, it has corrugated FRP roof paneling. Yeah, I think you are able to see this in this image. It's थोड़ा सा corrugated type of roof paneling है. I'm not exactly sure why this has been provided, but this is just a fact which I have put here. Maybe it is just from the aesthetic point of view, दिखने में अच्छा दिख रहा है. Continuous windows, which I was talking about, कि obviously the windows design जैसे cutout थे उसी तरीके से cutout रहेंगे from the side wall, but the glass unit is continuous. The glass unit is completely continuous. One question is there, sir. Hmm. Hello, sir. If they are providing the continuous window glass, then how will we ensure the safety if any fire inside the coach? How will you ensure the safety? Very Yes, good question. No, you see, in this case for the fire safety, there has been separate amount of precautions which have been taken, okay, to prevent the cases of instances of fire. One very important feature which has been provided is the fire detection system in the coaches. Obviously, in the initial train 18, the two prototypes which has been released, उसमें fire suppression system नहीं है, but fire detection system है. Okay. Now ये ऐसे system पहले हमारे coaches में होते नहीं थे. अभी जो आप normal LHB coach में देखेंगे, there is no, although maybe आजकल जो कुछ coaches आ रहे हैं उसमें आ रहे हैं 2021 series के, but as such earlier there used to be no fire detection system or suppression system. बट आजकल के ये जो ट्रेन्स नए बन रहे हैं और जो 44 नए ट्रेन सेट्स बनेंगे उसमें फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम दोनों हैं, जिसमें फायर इफ देयर इज एनी स्मोक अराइजिंग दैट स्मोक विल बी डिटेक्टेड एंड सप्रेशन सिस्टम में देन इट विल बी सप्रेस्ड, द फायर विल बी सप्रेस्ड. But that kind of a provision reduces the fire instances and or the threat due to the fire. Okay. But due to the continuous glass, of course, in the normal glass unit, we used to have that emergency glass to exit. But that is a good question that इस केस में यहाँ पे देखिए emergency window glass जो है यहाँ पे provide किया गया है. There is one unit for emergency window glass that has been provided. So from the inside, आपको अंदर से आप अगर देखेंगे, आप emergency glass आपको provision है ना, provision of emergency window glass it is there. But आपको hammer से तोड़ के निकलना पड़ेगा. मतलब you can say that the amount of effort which you have to put थोड़ा ज्यादा है, I admit. मतलब normal LHB coach में effort शायद कम लगता है, इसमें थोड़ा ज्यादा लगेगा exit करने में. But the emergency window has been provided. But अगर आप बोलेंगे कि सर इसमें तो फिर भी risk है, तो उसको you can say compensate करने के लिए हमने fire detection और suppression system provide किया है coach में. So that has been there. Thank you. है ना? Then इसमें there is an emergency passenger communication system that if the passenger wants to talk to the loco pilot, the guard, not loco pilot of course, the guard,
then that provision has been provided in case of any emergency. You can talk to the guard and कुछ भी ऐसा emergency तो आप वो बता सकते हैं. One very important design aspect which was here, which was followed during the design of train 18 was the design of AC ducting. AC के ducts को किस तरीके से design किया जाएगा so that you know we should get proper thermal insulation as well as sound insulation. Okay, so that was considered, and this is the standard type of a AC ducting arrangement, है ना? These are the two RMQs, RMQ1 and RMQ2, और ये उसके बीच में ये सेंट्रल डक्ट जा रहा है और उससे फिर ये ऑफशूट्स निकल रहे हैं ऑब्वियसली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू वेरियस कंपार्टमेंट्स, नॉट कंपार्टमेंट्स बट द वेरियस पार्ट ऑफ द कोच. But this is for a normal coach, which I mean the normal case of motor coach or driving trailer coach, उसके लिए ये है. But in case of a trailer coach, in a trailer coach आपको याद होगा कि पैंटोग्राफ होता है. तो वहां जब पैंटोग्राफ होता है तो ये रूफ पोर्शन है ना, यहाँ पे थोड़ा आरएमक्यू को एडजस्ट करना पड़ता है और ये जो रूफ पोर्शन है ये थोड़ा लोअर हो जाता है. ठीक है, ये सफिशिएंट, इट गेट्स लोअर. तो फॉर दिस अ स्पेशल अरेंजमेंट हैड टू बी डन. A special arrangement had to be done for how to extend the cooling arrangement here. क्योंकि RMQ तो यहाँ तक है, तो उसको करने के लिए these kind of sleek duct were provided. Sleek duct for low roof was provided. ये वाला स्ट्रक्चर तो आपने नॉर्मल कोचेस में अभी मैंने जो पहले दिखाया था ये तो पहले से ही था, बट एक एंड में the end at which the pantograph arrangement and everything is provided, वहां पे इस तरीके का एक स्लीक टाइप का इस तरीके का डक्ट बनाया गया. ये बहुत ही पतला है, इट इज वेरी थिन एंड देयर इज अ ट्रांजिशन एरिया आल्सो, यू कैन सी. ये यहाँ पे ट्रांजिशन एरिया इस तरीके से डक्ट से हुआ, इस ट्रांजिशन एरिया से जाते हुए ये स्लीक डक्ट में जाएगा. बट दिस काइंड ऑफ एन इम्प्रोवाइजेशन हैज बीन डन, ओके, टू कवर द कोच, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ अ ट्रेलर कोच वेयर द पैंटोग्राफ इज अवेलेबल. एंड इसको करने के बाद सिर्फ ऐसे ही नहीं, इसका सिमुलेशन CFD एनालिसिस भी किया गया, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक एनालिसिस, एंड इन ऑर्डर टू सी वेदर इट इज नॉइज फ्री, कोई unnecessary noise या sound produced तो नहीं हो रहा है due to this kind of an arrangement, and then only this was installed. So there are many other such furnishing related features. I have just put it in the slide, so I will just skip this part because we have limited time left now. These are all self-explanatory actually, you can just have a look. I don't have much content about these parts. Okay, you can have a look at them later. And I will just come to now the gangway. So ये जो gangway portion है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा यहाँ पे difference है in comparison to any other coach or any other train in Indian Railways. What we have finally done is that we have gone for sealed gangways. We have gone for sealed gangways. Are you able to understand what a sealed gangway is? What is a sealed gangway? No gap between two coaches. Yes, no gap between two coaches. Like the one which we discussed in the very first session, that at higher speed, which is the type of resistance which is the highest? If we are talking about speed greater than air resistance. Aerodynamic drag is very high. As the speed increases, that aerodynamic drag increases exponentially. So of course, उसको cover करने के लिए we saw that 45% of the drag is actually coming from the bogie region. We have done nothing for the bogie region. But okay, we have still addressed that 25% aspect of this coach to coach, inter-coach coupling. So what we have done, we have gone for these kind of sealed gangways. This has been initially was provided by Delner, the one which provides the coupler also. And here we can see that we have an exterior fairing. There is one we can call an exterior cover. This is the interior cover. Now this kind of an arrangement you must have seen in metros also. If you have traveled in metros, इस type का arrangement रहता है. But ये exterior fairing वाला arrangement यहाँ पे it has been provided to make a seamless connection from coach to coach, aerodynamically or stable करने के लिए. So that has been done. That has been done. Okay. And these are some technical data about this sealed gangway. And for the sealed gangway, there were two options initially when they were considering कि सिर्फ interior वाला लिया जाए, whether we can only go for this one. But then it was decided for aerodynamic stability, we want the exterior fairing also, the exterior layer also, so that we have a continuous stable
like this. We have a continuous structure like this. So you can see clearly here that the coach to coach distance has been covered by the exterior fairing of the sealed gangway. And this is the exploded view of that component. So then from the coupler point of view, what kind of couplers do we have in our EMU or MEMU? Any idea? Shaku couplers. Semi-permanent. Semi-permanent type Shaku couplers. Okay. So what type of coupler do you think we have here in train 18? Both, I think. Both means? Semi-permanent couplers. Automatic coupler and semi-permanent. We have automatic and semi-permanent couplers. Now, but here the semi-permanent couplers which we are using, there is a difference here in comparison to the semi-permanent coupler which is used in the normal EMU. From this figure, are you able to decipher the difference? Not very clear. Okay. You see this, I will show the next slide, then I think it should be clear. This slide. Here what they have done is that this front portion, the drawbar portion of the coupler, and a coupler and drawbar portion, this is same as any other semi-permanent coupler, but this draft gear portion, this has been modified to fit that of an LHB coach. जो LHB कोच का ड्राफ्ट स्टैंडर्ड हम लोग CBC का ड्राफ्ट गियर हम लगाते थे ना, CBC ड्राफ्ट गियर, that has been integrated with that of a semi-permanent coupler head, है ना? तो CBC draft gear with semi-permanent head. That is what has been done here. Now we know that the tight lock couplers, in the tight lock type couplers, we used to experience that jerks. Okay, so that is why a semi-permanent coupler has been provided, है ना? So but for semi-permanent coupler, here what we are doing, that we have 16 coaches, we have good passenger strength also, and we want a good type of a draft gear also from the safety point of view, because we are traveling at a very high speed. Okay, so the standard design which was used in EMU, it was thought that it is not good. I mean, from the safety point of view, it won't be very good. Having a CBC draft gear like this with a semi-permanent head, this will give a very good advantage to this coupler when it comes to the anti-telescopic or anti-climbing feature. है ना? We always check the anti-telescopic, anti-climbing है कि नहीं. So this kind of an arrangement gives it a very big edge when it comes to the anti-telescopic or anti-climbing arrangement. Okay, so that is why this kind of a remodeling was done, redesigning was done. And another redesigning which had to be done is that its level had to be lowered. To mount the fully sealed, एक तो आपको fully sealed gangway भी रखना है. This portion is this fully sealed gangway, है ना? और उसके नीचे ही आप coupler फिर उसके बाद connect कर सकते हैं. So the coupler height had to be reduced to 940 mm from 1105 mm. जो standard height होता है, उससे coupler height had to be reduced, had to be lower like this. ये gangway है और उसके just नीचे this coupler is there. So that had to be done. Of course, suitable design changes had to be done in the headstock to accommodate these kind of coupler. Okay, and after that, so obviously some analysis was done to check the strength of the coupling and all these things. After trials, it was found that it was a very good arrangement. And in fact, for the last 2 or 3 years, this train is running without any glitches, major issues. So it has been proved that this kind of an arrangement is good to go. Okay. अच्छा, अब एक बड़ा important item है. We have a separate lecture on this, but the TCMS. Have you heard about TCMS? Train control. Train control and management system. Yes, train control and management system. Train control and management system. Why do we need a train control and management system in a train set? It is a fully automatic and that. It is fully. What is fully automatic? Sorry. Why do we need a TCMS? Sir, basically, system. brake system is also governed by the brake electronic control unit that is also connected with TCMS. So, and some other equipments may also integrated with TCMS. Action power and braking system are fully integrated with this.
ट्रैक्शन पावर, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज इफ वी सी that in a normal concentrated power rolling stock we have a locomotive which is providing all the tractive effort, okay, and it is a unit, complete unit in itself. Locomotive ने power दिया, बाकी सब trailer coaches हैं, they need not be electrically, okay, electrical connection चाहिए maybe for hotel load, but और किसी reason के लिए electrical connection नहीं चाहिए. But here in a train set we have multiple locomotives, sort of, we have multiple motor coaches. So when the driver, as I said, when the driver is using the master controller to get the traction, who will convey that information to other motor coaches? Who will convey those information? Someone has to convey. It has to be conveyed to all the motor coaches that the driver is wanting to throttle, driver wants speed, and he wants to get greater acceleration. So that information needs to be conveyed to all the motor coaches simultaneously. And simultaneously, all the motor coaches need to provide that power, similar amount of power. There should not be any disparity. Synchronous रहना चाहिए. Similarly, braking में भी यही होना चाहिए. Braking भी synchronous होना चाहिए. Because if the traction and braking in the motor coaches do not match, what problem will arise? क्या problem होगा? It will definitely lead to uncoupling, decoupling आप कह सकते हैं. Because it will lead to added coupler forces, because one of your coaches is trying to accelerate, the other coach is trying to not accelerate or brake, or it is trying to accelerate at a different rate. So ये सारे problems आएंगे अगर proper synchronicity ना रहे. तो इसको synchronous बनाने के लिए TCMS system is very very important. If you do not have a TCMS, you cannot operate a train set. आप कोई भी ट्रेन सेट देखिए, दुनिया भर में देखिए, दिल्ली मेट्रो देखिए, किसी भी मेट्रो में देखिए, ट्रेल 18 में देखिए, TCMS चाहिए ही चाहिए in order to conduct all these operations. Interface with driver desk, okay, pantograph control, क्योंकि pantograph एक नहीं है, we have 4 pantograph, और ड्राइवर DTC में बैठ रहा है, उसमें तो pantograph है भी नहीं. That pantograph is 2 coaches away in the trailer coach. So how will that command go कि कौन कौन से pantograph आप होंगे? At a time ट्रेन चल रही होती है, 4 में से कोई 2 ही pantograph आप रहते हैं, ठीक है? तो how will that information be conveyed? तो उस सब के लिए हमें TCMS चाहिए, ट्रेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिस्टम, VCB कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल. सबसे इंपॉर्टेंट तो मुझे यही लगता है, ट्रैक्शन कंट्रोल, regenerative brake control for the total brake calculation, so that synchronous brake application is done in all the coaches. Brake blending करना, जो मैं बोल रहा था, it is calculating how much brake will be ED, how much will be EP. Who will do that? TCMS will do that. तो ये सारी चीजें जो हैं, all these things will be controlled by the TCMS. There are many such features of TCMS. What we will have a dedicated lecture on TCMS. We'll have a dedicated lecture on TCMS. So basically, it's a computer, na? हाँ, it is basically a computer, okay. But it's basically also a networking system. Okay. सिर्फ कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर विद नेटवर्किंग सिस्टम आप समझिए, है ना? Okay. और वो नेटवर्किंग सिस्टम मैंने आपको ब्रीफली यहाँ पे दिखाया है ना? उसमें इसमें एट द वेरी फर्स्ट लुक इसको थोड़ा देखने में समझ में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप इसको ब्रेकअप करके समझेंगे तो इट विल ऑल मेक सेंस. तो DTC एंड मोटर कोच, ट्रेलर कोच, ये अरेंजमेंट तो हमें याद हो चुका है. ये ऑफ कोर्स दिस इज फॉर द एंड बेसिक यूनिट. अब यहाँ पे ये TCMS सिस्टम क्या करता है ना, जितने भी ये कम्युनिकेशन नेटवर्क है उस सबको इंटीग्रेट करता है, उस सबको गवर्न करता है. Now, how do the coaches talk among themselves? आपस में ये लोग बात कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, वो हमने इस पर्टिकुलर इमेज में आपको दिखाने की कोशिश की है. ओके, सो फॉर एग्जांपल इन अ ड्राइविंग ट्रेलर कोच वी हैव अ ड्राइवर डेस्क, है ना, मेन ड्राइवर डेस्क, जिसमें ड्राइवर कमांड देता है कि अभी ट्रैक्शन चाहिए, ब्रेकिंग चाहिए, क्या चाहिए, और उस पर काफी सारे इनपुट्स, काफी सारे आउटपुट्स भी उसमें आते हैं. Now, that is also connected to a central computer, CCU1 and a backup CCU2. ये भी ड्राइविंग ट्रेलर कोच में ही होता है, जो मेन कंप्यूटर होता है आपके मेन DTC में. ओके, तो यहाँ पे ड्राइवर डेस्क के साथ आप ये जो येलो लाइन है इसको फॉलो करिए. ये येलो लाइन देखेंगे आप, CCU1 से कनेक्टेड है, CCU2 से कनेक्टेड है. इज इट यस और नो? ओके सर, तो हाँ, ये इट इज कनेक्टेड टू बोथ ऑफ दीज. फिर again you start following the yellow line, you will see it is the yellow line is connected to PCU1,
PCU1R, MCU1, MCU1R, EPCU. Now you will say ये सब क्या short forms है? What do these stand for? Okay, I will give you a list of the full form, but you see, I will briefly tell you. PCU1 is the passenger control unit. MCU1 is the motor control unit. EPCU is enhanced passenger comfort unit. तो बेसिकली क्या है कि ACU is the auxiliary control unit. इन सबका फंक्शन डिफाइंड है. ये इंडिविजुअल कंप्यूटर्स हैं जिनको इंडिविजुअल काम दिया गया है. फॉर एग्जांपल MCU आपको बार बार दिख रहा होगा, मोटर कंट्रोल यूनिट. MCU का पर्पस तो आप खुद ही समझ पा रहे होंगे. व्हाट इज द पर्पस ऑफ MCU? फ्रॉम MCU फुल फॉर्म व्हाट डू यू? तो मोटर कंट्रोल करने के लिए. हाँ, ट्रैक्शन, फॉर द ट्रैक्शन पर्पस है ना. तो फॉर द जो ट्रैक्शन हमें देना है इंडिविजुअल कोच में. और यू विल सी दैट MCU इज ओनली अवेलेबल इन द मोटर कोच. इसी कोच में MCU है ही नहीं. ओके, सो दिस इज फॉर कंट्रोलिंग ट्रैक्शन. MCU1R, इसमें R का मतलब होता है रिडंडेंसी. R स्टैंड्स फॉर रिडंडेंसी. इसका मतलब है कि अगर MCU1 फेल हो गया, still MCU1R is backup. So what we have done is we have provided 100% redundancy for the motor control unit, है ना. और ये जरूरी है. This is very much important. Okay. Similarly यहाँ MCU2R है. Okay. EPCU जो है enhanced passenger comfort unit है. This is for from the कोच के अंदर की जो लाइटिंग्स और वो सब उन सारे कंट्रोल्स के लिए, RMPU कंट्रोल के लिए, वो उनसे लिंक्ड है. It is for that. ACU जो आपका सिस्टम है, दिस इज फॉर ऑक्सिलरी कंट्रोल यूनिट. ऑक्सिलरी कंट्रोल के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में विल टॉक. जो ऑक्सिलरी इलेक्ट्रिकल्स है हमारे कोच के अंदर, है ना, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रिकल्स है. जैसे RMPU आपको एयर कंडीशनिंग चलाना है, उसको पावर देना है, तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय द ACU, ऑक्सिलरी कंट्रोल यूनिट. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर. बट यहाँ पे आपको मैं 3 important networks दिखाना चाहूंगा. I want to show you 3 important networks. One is the yellow line, which signifies the train line signal. एक ट्रेन लाइन सिग्नल दिखाता है येलो लाइन. ठीक है. तो ये ट्रेन लाइन सिग्नल जो है आप देख सकते हैं ड्राइवर डेस्क से ओरिजिनेट होता है और ये पूरे एंड तक जाता है, लास्ट तक पूरा जाता है और वापस घूम के आता है. ये पूरा एक कंप्लीट लूप क्रिएट करता है. ठीक है. मतलब इट गोज एंड इट कम्स बैक. इट इज अ कंप्लीट लूप. Now, what is the significance of train line signal is that communication, it is a communication network loop which originates from front desk of the driver and goes to the rear end and again comes back to the front desk. Okay. It enables and indicates connectivity and continuity between driver desk and all the coaches of the train set. ये enable करता है कि सारे coaches connected हैं कि नहीं, electronically whether all the coaches are connected to the driver desk or not. And this is very, very important, train side line signal. Now, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कहीं ट्रेन लाइन सिग्नल फेल हो जाए. इट इज पॉसिबल, यस और नो? इट इज वेरी मच पॉसिबल. यहाँ पे कहीं पे किसी तरीके से ट्रेन लाइन सिग्नल में कुछ इश्यू आ गया, फॉल्ट आ गया, तो उस केस में क्या होना चाहिए? कोई ना कोई बैकअप होना चाहिए, यस और नो? देयर शुड बी सम रिडंडेंसी. सो अनदर लेवल ऑफ रिडंडेंसी दैट हैज बीन प्रोवाइडेड इज दिस FGU, फंक्शन जनरेटर यूनिट. ये जो ब्लू लाइन से दिखाया गया है. Now if you start following it, आप देखेंगे कि ये भी ब्लू लाइन वहीं जा रहा है जहां पे आपका येलो लाइन गया था. जहां ट्रेन लाइन सिग्नल गया था वहां FGU भी जा रहा है. ठीक है. तो what that means is कि अगर ट्रेन लाइन सिग्नल फेल हो जाता है, even in that case, सारे कोचेस में कंट्रोल कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए हमारे पास जो बैकअप है उसको FGU बोलेंगे, दैट इज फंक्शन जनरेटर यूनिट. वो कम्युनिकेशन नेटवर्क भी हमारा ओपन रहेगा. इवन दैट विल रिमेन ओपन. ओके. बट उसमें फिर एक ड्रॉबैक ये है कि आपका अगर ट्रेन लाइन सिग्नल फेल हो गया, आपका स्पीड जो है 100 kmph, मैक्सिमम स्पीड आप जो जिस पर ड्राइव कर सकते हैं वो 100 kmph हो जाएगा. उससे ज्यादा पे आप नहीं चल सकते. यू कैन ओनली वर्क एट 100 kmph विद द FGU, व्हिच इज द फ्रीक्वेंसी जनरेटर यूनिट. कभी कभी ये हो सकता है कि इवन द FGU फेल्स. अगर FGU भी फेल हो गया तब भी हमारे पास CAN नेटवर्क से, एक कंट्रोल एरिया नेटवर्क से हम बेसिक ऑपरेशन कर पाएंगे. ठीक है. इसमें मैक्सिमम स्पीड रिड्यूस्ड टू 60 kmph. इसको रेस्क्यू ड्राइव मोड कहते हैं, डिग्रेडेड ऑपरेशन. इसमें हम इसको चला सकते हैं इवन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ दीज टू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स. ओके. एंड अनदर इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन एस्पेक्ट व्हिच आई जस्ट विश टू ब्रीफली कवर is that यहाँ पे you can see there is one something written as ECN and यहाँ पे there is something written as ETB.
ECN stands for Ethernet Consist Network. ETB stands for Ethernet Train Backbone. Okay. Excuse me, sir. हाँ. जी सर, FGU Yes, में Mr. Chetan. जो सभी ऑपरेशन, जी सर, FGU में सभी ऑपरेशन एक्टिवेट रहेंगे सर? सभी ऑपरेशन एक्टिवेट रहेंगे। मतलब कोई भी डिफरेंस, ये देखिए ना, आप FGU को फॉलो करिए, जहां जहां पे आपके ट्रेन में सिग्नल गया है, FGU हर जगह गया है, ठीक है, सभी ऑपरेशन रहेंगे। लेकिन आपका जो मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट, मतलब आपका जो मैक्सिमम स्पीड जो है ना, वो Vmax एक लिमिट होता है। आपका ट्रेन 100 kmph से ज्यादा जाना नहीं देगा। आपका कंट्रोल सिस्टम जो है TCMS, उसको समझ आ जाएगा कि कुछ प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन सिस्टम में। 160 टॉप स्पीड 160 सेट किया है, उसको रिड्यूस करके 100 कर देगा। और अगर आपका FGU भी फेल हो जाता है, तब तो 60 पे आ जाएंगे आप। ओके, तो ये रिडंडेंसी कम्युनिकेशन के लिए दिया गया। हाँ, इसमें सभी एक्टिवेट नहीं रहेंगे सर? हाँ, उसमें सभी एक्टिवेट नहीं रहेंगे। वो कैन नेटवर्क का थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है जो इसमें कवर्ड नहीं है। उसमें लिमिटेड ऑपरेशंस बस, लिमिटेड कंट्रोल रहेगा, ठीक है, एट 60 kmph। जी सर। अच्छा, अनदर जो कम्युनिकेशन है कि एक ईथरनेट कंसिस्ट नेटवर्क, अगर कोच के अंदर जितने भी ये सब कंप्यूटर, छोटे छोटे कंप्यूटर्स हैं, ये आपस में कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं थ्रू दिस ग्रीन लाइन, ये ग्रीन लाइन से आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। इसको कहते हैं ईथरनेट कंसिस्ट नेटवर्क। सो एक बेसिक यूनिट के अंदर जितने भी लोकल कंप्यूटर्स हैं, फॉर एग्जांपल EPCU, ACU, MCU, ये सब एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड रहेंगे थ्रू दिस ईथरनेट कंसिस्ट नेटवर्क, ठीक है। ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ओके। बट अगर बेसिक यूनिट चेंज हो जाता है, आप इस बेसिक यूनिट से सेकंड बेसिक यूनिट में जा रहे हैं, एंड बेसिक यूनिट से मिडिल बेसिक यूनिट, उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है थ्रू दी ईथरनेट ट्रेन बैकबोन। ये रेड कलर का लाइन है ना, ये ईथरनेट ट्रेन बैकबोन है। और इसमें भी देखिए, इसमें डबल लाइन है ना, सो इट इज अ डबल रिडंडेंसी इसमें दिया गया है। तो दिस इज इंटर बेसिक यूनिट कम्युनिकेशन के लिए दिया गया है, ओके। सो नेटवर्किंग, जो ट्रेन 18 में जो नेटवर्किंग प्रोवाइड किया गया है, ये अपने आप में ही एक विशाल टॉपिक है। और इसको कवर करने के लिए हमने मेधा के एग्जीक्यूटिव, उनको हमने इनवाइट किया है। वो सेशन, एक सेशन आज होगा सेकंड हाफ में, और एक कल 11:30 पे होगा। उन दो सेशंस में you will get a complete idea about the networking and the communication network, or the TCMS system which has been provided, okay. What I have currently given you is just a brief overview of the things, because most of the things are like black box to us, and Medha, which installed the initial communication system in the initial 2 rigs, they can explain it better, okay. जी सर। हाँ सर, ट्रेन 18 में जो इस तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम है, तो क्या गार्ड्स के प्रोविजन पर कुछ विचार किया गया क्या, या इसमें गार्ड दिया जा रहा है सर? गार्ड? यस सर। नहीं, गार्ड का प्रोविजन तो रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। मतलब गार्ड, देखिए गार्ड, सर जैसे मेट्रो सिस्टम है, देखिए ये कम्युनिकेशन सिस्टम, इट इज नॉट द कम्युनिकेशन सिस्टम। मतलब ये हम बाहर सिग्नल, देखिए गार्ड का फंक्शन तो ये थोड़ी होता है कि कोच के बीच में ट्रैक्शन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब ट्रैक्टिव फोर्स इक्वल लग रहा है, वो सब गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। गार्ड की जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्स कनेक्टिविटी देखना, कि अगर डीकपलिंग हो जाता है तो समझना, ठीक है, आई एडमिट कि अगर डीकपल हो जाएगा यहाँ पे आपको अलर्ट आ जाएगा, ओके, आई एडमिट दैट थिंग इज देयर। बट गार्ड के और भी इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं ट्रेन में, जैसे कि एक्सचेंज, अगर आपको देखना, एक्सचेंज ऑफ सिग्नल ट्रेन पे जब स्टेशन के दौरान होती है, वो सब करना। ऑल्दो दैट मे आल्सो कॉल्ड इट एन आउटडेटेड कॉन्सेप्ट, बट वो सब ड्यूटीज गार्ड की एज इट इज सेम है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन जो ट्रेन 18 में गार्ड का है ना, वो जो डोर ओपनिंग क्लोजिंग है ना, डोर ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसका कंट्रोल भी गार्ड के पास रहता है, ओके। सो ड्राइवर पे हम डोर खोलने का प्रेशर नहीं रखते, कि ड्राइवर का बस काम रहता है कि वो ट्रेन चलाए और ट्रेन को सिग्नल के हिसाब से स्टेशन पे स्टार्टर के सामने जाके रोक दे, स्टार्टर सिग्नल के सामने जाके। अब वो डोर खोलना नहीं खोलना, दैट इज गार्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। डोर ओपनिंग क्लोजिंग वो गार्ड ऑब्वियसली वो ड्राइवर से डिस्कशन के साथ ही करेगा, बट वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राइवर को दिया गया है, ओके, गार्ड को दिया गया है। तो गार्ड की काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो एज इट इज हैं, बट यस, बट विथ ऑल दीज कम्युनिकेशंस और भी आगे और एडवांस अगर होगा तो गार्ड, वी कैन ऑलवेज रिमूव गार्ड, बट यू सी दैट इज अगेन अ पॉलिसी मैटर।
ये एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो we cannot comment on these things. गार्ड रिमूव करना है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें रिमूव हो सकती हैं if we go for automation, but we always should have a human level of redundancy. सेफ्टी के लिए अच्छा होता है, एक ह्यूमन लेवल ऑफ redundancy. स्टिल कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें मशीन भी कभी कभी फेल हो जाता है और ह्यूमन इंस्टिंक्ट काम आती है, तो आई थिंक इट इज बेटर टू हैव अ गार्ड. थैंक यू सर. अच्छा, एक और फीचर आपने गार्ड से मुझे याद है कि जो इमरजेंसी टॉकबैक्स मैंने प्रोविजन एक दिया था, हर कोच में पैसेंजर्स को अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे इसमें पैसेंजर अगर कम्युनिकेट करना चाह रहा है रनिंग क्रू से, तो हमारे नॉर्मल कोच में तो कोई प्रोविजन है ही नहीं. हमारे नॉर्मल कोच में एक ही प्रोविजन है कि आप अलार्म चेन पुल कर लीजिए, आप चेन पुलिंग कर लीजिए तो गाड़ी रुक जाएगी. बट यहाँ पे अगर आपको कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो आप वो इमरजेंसी टॉकबैक सिग्नल से आप ड्राइवर से तो नहीं, गार्ड से बात कर सकते हैं. ड्राइवर को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, बट आप गार्ड से बात कर सकते हैं कि क्या जो इशू है वो ही कैन एक्चुअली टॉक टू यू, ओके, और उस बेसिस पे दे में डिसाइड कि क्या करना है. सो वहां पे भी गार्ड को शिलभद्र जनार्दन हियर. यस सर. ये जो चल रहा था गार्ड और ड्राइवर लाइक चीज है कि अगर मान लो जैसे डोर क्लोजिंग और ओपनिंग, गाड़ी रुकी तो गार्ड उसको ओपन करेगा सर, जरूर कुछ इसका इंटरलॉक होगा और उसका कहीं से ड्राइवर से, मान लो कि दरवाजा ओपन है, गार्ड ने दरवाजा क्लोज नहीं किया समहाउ और ड्राइवर वो स्टार्ट करना चाह रहा, तो क्या इसका भी जरूर ये होगा? हाँ, इंटरलॉक है सर. कुछ इंटरकनेक्शन की वो ड्राइवर स्टार्ट नहीं कर पाएगा? यस सर, यस सर, बिल्कुल. ट्रैक्शन के साथ इंटरलॉक है डोर का, एज लॉन्ग एज द डोर इज ओपन ट्रैक्शन नहीं मिलेगा. हाँ. सो इवन इफ की गार्ड के पास कंट्रोल है, डोर का कंट्रोल है, तो ड्राइवर उसको गाड़ी चला नहीं सकता जब तक कि गार्ड उसको दरवाजा बंद नहीं करे. एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली. आपने सर वेरी गुड पॉइंट. नहीं तो एक और चीज होगा कि दरवाजा अगर बंद हो गया तो गार्ड के पास तो जरूर और कुछ विजुअल सिग्नल जाता हो कि दरवाजा क्लोज हो गया. यस सर, यस. हाँ सर, विजुअल सिग्नल है ना सर. सर जो ड्राइविंग ट्रेलर जो सीसीटीवी सिस्टम लगे हुए हैं सर, उसका ड्राइवर डेस्क पे फीड आता है. हाँ, दोनों एंड पे. हाँ, होना चाहिए. मेट्रो में क्या है, मेट्रो में क्या है कि ये उल्टा है. मेट्रो में तो हालांकि सिग्नलिंग सिस्टम काफी स्टैंडर्ड है, माने लेवल ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन 3 और 4 पर चला गया है, हाईएस्ट लेवल जो है अनअटेंडेड. तो उसमें क्या है कि गार्ड ड्राइवर ही, जैसे ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन 3 है तो उसमें क्या करता है, ड्राइवर ही जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है इन मोस्ट ऑफ द मेट्रो कि जो ड्राइवर तो नहीं कर सकते हैं उसको, वो जो क्रू कैब में जो है वही उसको बटन दबाता है डोर क्लोज करने के लिए. तो डोर क्लोजिंग इज बाय व्हीवर इन द क्रू, इज नॉट ड्राइवर. अच्छा, है ना. लेकिन यहाँ पर ये चीज उल्टा कर दिया है कि गार्ड के पास दे दिया है, वो ठीक है. और फ्यूचर में हो सकता है जैसा लास्ट टाइम बता रहे थे वो जो आए थे सीओ साहब सुब्रांशु साहब, कि अभी गार्ड दिया है, फ्यूचर में ये प्लान है कि गार्ड को हटा लो. कब हटाएंगे उसके लिए पॉलिसी डिसीजन है. ये तो सर पॉलिसी है सर. हाँ, कि गार्ड को कब हटाएंगे और क्या उसमें कुछ चेंजेज आएगा. क्योंकि अभी जो ट्रेंड सेट अभी जो बजट में है 400 कोच का, वो तो नेक्स्ट जनरेशन है. ये देयर आर सम चेंजेज, कुछ होगा. अब क्या होगा वो पता नहीं है, लेकिन कुछ इस पर इसके ऊपर और एड ऑन होगा कुछ. एग्जैक्टली. ठीक है, थैंक यू. थैंक यू वेरी मच सर. कैरी ऑन सर. सो हेलो सर. हाँ सर, अगर ईसीएन नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आती है तो इसका क्या हमारा टीसीएमएस या एफजीयू मोड पे अगर गाड़ी उससे नेटवर्क से चल रही है तो क्या स्पीड रिस्ट्रिक्शन या कोई सिग्नल जनरेट होता है क्या ट्रेन सेट में? सिग्नल जनरेट होगा बट स्पीड रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा. सिग्नल जनरेट होगा. हाँ, ईसीएन और इथरनेट ट्रेन बैकबोन में अगर किसी तरह का फॉल्ट आएगा तो सिग्नल जनरेट होगा, बट आपका ट्रैक्टिव ऑपरेशन में एज फार एज आई एम अवेयर ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. ट्रैक्शन में हमेशा जो प्रॉब्लम आएगा, मतलब उसमें लिमिटेशन आएगा, वो आपका ट्रेन लाइन सिग्नल, फंक्शन फ्रीक्वेंसी जनरेटर सिग्नल या कैन नेटवर्क एक होता है, उसमें अगर किसी तरीके का बाधा या इंटरप्शन होता है तभी ट्रैक्शन में वो ट्रैक्शन को अफेक्ट करेगा. बट ईसीएन और ईटीबी में अगर कोई दिक्कत आएगा तो जो
हमारे होटल लोड है अंदर, कोच के अंदर जो हमने प्रोवाइड किए हुए हैं फीचर्स, उसमें कुछ इंटरप्शंस आ सकती हैं, बट आई डोंट थिंक कि ट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कोई लिमिटेशन। तो सिग्नल ECN हाँ, सिग्नल विल गो टू द क्रू ऑफ कोर्स, सिग्नल तो मिलेगा, जी जी देयर इज सम प्रॉब्लम। सर अगर ये ECN जो भी नेटवर्क है जनरली छोटे छोटे जो हमारे जो लोकल, जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा ब्रेक से रिलेटेड या कोई एयर सस्पेंशन सिस्टम के फेलियर इंडिकेशन से संबंधित कोई इंस्ट्रक्शन है या मैसेज कम्युनिकेट करना है, अगर वो एरिया में कोई माल फंक्शनिंग हो गया सिस्टम का या ब्रेकेज है, तो उस केस में एयर सस्पेंशन फेलियर में तो 60 kmph पे ऑटोमेटिक होता है। और इसी तरीके से अगर लोड कंडीशन के हिसाब से हमारा ब्रेक कैलकुलेट करके भी ब्रेक जो है अप्लाई करता है। पूरा TCMS देख लेते शायद। तो ये सर अभी क्या है कि अगर मान लीजिए कि अभी जो हमारे एक्चुअली क्या है, जो एयर सस्पेंशन सिस्टम के जो हमारे फेलियर इंडिकेशन सिस्टम अभी जो प्रपोज कर रहे हैं या जो आ रहे हैं, उसमें ये देखा गया है कि ब्रेक पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो डिजाइंड होते हैं कि उसका जो अगर एक बोगी का एक साइड का फेलियर है तो वो दूसरे साइड को हेल्दी मानते हुए लोड कैलकुलेशन एवरेज करके और उसके बाद ब्रेक पावर कैलकुलेट करके उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। बट हमारे यहाँ जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है कि एयर सस्पेंशन का अगर एक की वजह फेलियर की वजह से एक तरफ का प्रेशर एयर सस्पेंशन का वो ड्रॉप होता है, तो भी हमको 60 kmph पे चले जाना है ऑटोमेटिकली। वो थोड़ा कन्फ्लिक्ट होता है दोनों का, जो हमारा जो कवर नहीं हो पाता इसमें कि वो जो ब्रेक कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ट्रेन सेट में जो उनका ठीक बैठता है, बट हमारा जो एयर सस्पेंशन के हिसाब से है उसमें कहीं कहीं थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉपर तरीके से उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं मैसेज को। नहीं, वो एयर सस्पेंशन अगर एक तरफ का फेल होता है फॉर एग्जांपल, तो उसमें देयर इज अ चांस ऑफ कोच एक तरफ झुक जाएगा, योइंग होगा आपका कोच का, ठीक है, उसके चांसेस रहते हैं। ऑल्दो वी हैव योर डैम्पर्स और वो प्रोविजन है, बट स्टिल योइंग के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंस्ट्रक्शन होगा कि अगर क्लियरली एस्टैब्लिश हो चुका है कि एयर सस्पेंशन फेल्ड है, तो 60 kmph का स्पीड रेस्ट्रिक्शन लगा देना चाहिए फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। ब्रेक एप्लीकेशन ठीक है, ब्रेक एप्लीकेशन देखिए, ब्रेक एप्लीकेशन होगा वो कार बॉडी की स्टेबिलिटी से रिलेटेड, तो मुझे नहीं लगता कि ब्रेक एप्लीकेशन आप कर रहे हैं, बट आप कार बॉडी में जिसमें पैसेंजर्स बैठे हैं अगर उसकी स्टेबिलिटी कहीं पे खतरे में है, तो आई थिंक इट इज बेटर टू लिमिट द स्पीड। आई थिंक इट इज सेफर। मतलब हो सकता है कि हम चला लें, मतलब आपकी बात सही है कि मे बी we can go at higher speeds, but from the safety point of view I think it is not recommended। वो टिल्टिंग जो होता है वो भी मोमेंट्री हमारा होता है। एक्चुअली क्या है कि जो बोगी का दूसरे साइड का भी हमारा डुप्लेक्स चेकवाल से कनेक्टेड होता है, तो वो भी उसकी हाइट जो है वो डाउन हो जाएगी, बट हमारा चूंकि प्रेशर सेंसर से जो सिग्नल जाता है, तो इसलिए वो जो उसमें उस बीच में क्या है कि ये मानते हैं कि अगर एक बोगी एक साइड का प्रेशर जो है ड्रॉप हो गया है और दूसरे साइड का वो हेल्दी है, तो उसको कैलकुलेट एवरेज जो उसका निकाल लेते हैं कि ये मानते हैं कि ये अगर प्रेशर इधर का कम है उधर का सही है, तो कभी कभी इसमें माल फंक्शनिंग या किसी कारण से सेंसर डिफेक्ट की वजह से कि वो सेंस नहीं कर पा रहा, इस वजह से होगा, तो वो उसको हेल्दी मान के वो ज्यादा पावरफुल ब्रेक जो है अप्लाई करते हैं कि नहीं लोडेड कंडीशन में, लोडेड कंडीशन में अगर होगा तो ज्यादा ब्रेक पावरफुल ब्रेक चाहिए होगा। और अगर एम्प्टी में है यानी कि प्रेशर अगर कम है, तो इट मींस कि वो लोड प्रोपोर्शनल स्टिफनेस एयर स्प्रिंग का होता है, और अगर इसका मतलब कि प्रेशर कम है, इट मींस कि पैसेंजर कम बैठे हैं, कोच एम्प्टी कंडीशन में है या टेयर कंडीशन में है। बट वो अभी जो हमारी कंडीशन जो बनी है वो बस्टिंग की वजह से या फेलियर की वजह से बनी है। करेक्ट। तो उस केस में क्या है कि प्रेशर ड्रॉप हुआ तो हम ये नहीं कर सकते कि उसको कंफ्यूजन क्रिएट कर दें कि ब्रेक पावर पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो ठीक है, पूरा उसको कम्युनिकेट कर देगा कि पूरा ब्रेक लगाना है, बट ये एवरेज करने पे अगर इस गाड़ी का जो हमारा वो 1 के बिलो प्रेशर हमारा नहीं पहुंचता है, क्योंकि 4 एयर स्प्रिंग का अगर हम प्रेशर एवरेज करेंगे, एक का सपोज 1 के बिलो भी है, बाकी सबका 5 kg है, तो 20 डिवाइडेड बाई 4 इट मीन्स की 16 डिवाइडेड बाई 4 इट मीन्स की हमारा वो 4 kg बताएगा। अब 4 kg हमारा एक्चुएशन प्रेशर नहीं है, एक्चुएशन प्रेशर हमारा लेस देन 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है।
तो उस केस में क्या है कि वो उसमें कंट्राडिक्शन होता है। अगर मान लीजिए गाड़ी कम लोड पे चल रही है, जो इंटरनल प्रेशर कम रिक्वायर्ड है, 3 का सपोज है, तो 9 और 110 डिवाइडेड बाई 4 2.5 बताएगा। बट जब तक कि दूसरी स्प्रिंग खाली नहीं हो जाती हमारी डुप्लेक्स चेक वाल्व से, तब तक वो हमारा एक्चुएट नहीं होगा, तो उसमें टाइम लैगिंग होगा। तो ये जो सिस्टम अभी ज्यादातर जो भी लोग प्रपोज कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो ब्रेक और एयर स्प्रिंग फेलियर इंडिकेशन सिस्टम को कंबाइंड करके कर रहे हैं। तो जिससे कि हमारा ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट जो है सिस्टम को मतलब प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। और हमने कई एक में कमेंट किया कि इसका टोटली सेपरेट करिए। वो प्रेशर सेंसर ऐसा प्रेशर सेंसर हो कि जो कि 2 मैसेज भेज सके, एक जो हमारा वेट कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो, दूसरा जो प्योरली प्रेशर सेंस करके वो हमारा उसको एक्चुएट करे कि अगर वो किसी एयर स्प्रिंग का प्रेशर 1 के बिलो जाता है तो उस केस में हमें कंप्लीट मतलब उसका स्पीड जो है वो रिड्यूस करके 60 kmph करना है। क्योंकि जो उसमें डिफ्लेटेड कंडीशन में हमारा राइडिंग इंफीरियर हो जाता है और अभी तक हम आगे बढ़ रहे हैं, बट 60 kmph तक ही हम जो है उसको परमिट किए हैं। तो इसलिए जो है वो थोड़ा सा सिस्टम अभी मेरे ख्याल से अलग करने की जरूरत है। मतलब अभी वो क्या कर रहा है कि एवरेज कैलकुलेट कर रहा है सारे सस्पेंशन का मिला के। आप कह रहे हैं, आप प्रपोज करते हैं कि उसको अलग अलग से उसका रीडिंग आना चाहिए, यही ना? कि अगर किसी इंडिविजुअल का पूरा ही ड्रॉप हो गया तो उसको सेंस करके फिर उसका लॉजिक अलग होना चाहिए, रादर देन कि आप एवरेज कि सब कुछ सही चल रहा है। बिल्कुल, आपका सजेशन बिल्कुल ही जेन्युइन है। आई थिंक इट इज अ वेरी जेन्युइन सजेशन। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग फॉरवर्ड दिस पॉइंट। और अभी एक सेशन होगा नॉर ब्रेम्स के साथ, आप उस सेशन में भी बिल्कुल ये पॉइंट उठाइएगा। नॉर ब्रेम्स के जो भी ट्रेनर आएंगे, तो ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि हमें इंडिविजुअली हमारे पास प्रोविजन रहना चाहिए कि सारे एयर सस्पेंशन का इंडिविजुअल रीडिंग जाए और उस बेसिस पे लॉजिक डिसाइड हो, रादर देन अभी जो सिस्टम है कि वो उसको कंप्लीटली एवरेज आउट कर दिया जाता है कोच। दैट इज नॉट गिविंग अस अ वेरी क्लियर पिक्चर। मतलब वो जरूरी नहीं है कि सही पिक्चर दे हमें। बिल्कुल, वेरी जेन्युइन पॉइंट। हाँ ठीक, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो फाइनल आइटम, अभी देखिए टाइम हो गया, आई एम सॉरी, बट अभी बस 5 मिनट में मैं इसको फिनिश रैप अप करता हूँ इस पहले सेशन को। तो ये फाइनल जो है हमारा कि इंटर व्हीकुलर कनेक्शन कैसे होता है, मतलब कोच टू कोच कम्युनिकेशन के बीच में हम क्या क्या हमने प्रोवाइड कर रखा है। सबसे पहले चीज तो ये डीटीसी, एमसी, टीसी और एमसी के बीच में जो कोच कम्युनिकेशन के लिए जो वायरिंग है, ये उसका नंबरिंग है सी डी B1 B2 AG F1 F2। नाउ यू विल आस्क इनका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज वायरिंग। तो आई हैव अटैच्ड, इसके साथ मैंने आपको एक कंप्लीट एक अटैच शीट दिया है जिसमें ए टाइप कपलर अगर है तो ए टाइप से आप देख रहे हैं ईटीबी कनेक्शन जा रहा है, ईटीबी कनेक्शन है, ईसीएन कनेक्शन है, ऑडियो का फीड आपस में कनेक्शन जा रहा है, पेकू का कनेक्शन जा रहा है, और ब्रेक कनेक्शन जा रहा है। ये ए टाइप कपलर का है। सिमिलरली B1 B2 में आपको 415 वोल्ट एसी सप्लाई तीनों फेजेस का कनेक्शन जा रहा है B1 और B2 में। 415 वोल्ट एसी फीडर टाइप ऑफ कनेक्शन आपके कोच टू कोच डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। डी कपलर से आपका जो 110 वोल्ट डीसी नेटवर्क है, ये उसका कपलर है, डी और सी, ठीक है, उस पे जा रहा है। एंड तो इस टाइप के ये डिस्ट्रीब्यूशंस है। ये इंटर व्हीकुलर कनेक्शंस आप एक बार इसमें स्टडी कर सकते हैं। यू कैन जस्ट स्टडी द इंटर व्हीकुलर कनेक्शंस की किन किन कोचेस के बीच में क्या है, जस्ट टू गेट एन आइडिया। एंड सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस सेशन। जो अगला सेशन है, we will start after 15 minutes at 11:45. That session will be about the propulsion system, the electrical propulsion system which we are having in train 18. If there are any questions, you are welcome to ask, please.